Let us see the next question. Following information is available for consideration. So we have been provided with a set of the information. BSE Index is 25,000. Value of the portfolio is 50,50,000. Risk-free rate of interest is 9% per annum. Dividend yield on index is 6% per annum. Beta of the portfolio is 1.50. We assume that the futures contract on the BSE, that is Bombay Stock Exchange Index, with 4 months maturity is used to hedge the value of the portfolio over the next 3 months. One futures contract is for delivery of 50 times the index. Based on above information, the first question is you are required to compute the price of the futures contract in a way that say we understand that say this is the spot index value और उसको बेस लेके हमें फ्यूचर्स इंडेक्स वैल्यू फाइंड करना है. फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दे रखा है. I request all of you to go through the question, please. So futures contract जो है that is available for a time period of 4 months. I request you that say put your answer in the chat box कि 4 महीने के futures contract का क्या profit loss होगा. I'm sorry, क्या प्राइस होगा. Write your answer in the chat box. So let us answer the question. Futures price is equal to spot plus interest minus dividend. The question is providing the information that risk-free rate of interest is 9%. So 25,000 plus 25,000 into 0.09 into 4 divided by 12. ये इंटरेस्ट को हमने क्या किया, ऐड किया. माइनस क्या किया जाएगा 25,000 क्योंकि डिविडेंड एलिमिनेट करना पड़ेगा into 0.06 into 4 divided by 12. This is the way we are required to make the calculation. $25,000 into 9% into 4 by 12, 715. 25,000 into 6% into 4 by 12, that is 500. $25,000 plus 750 minus 500, तो फ्यूचर्स प्राइस होगा इंडेक्स का 25250. That is what we understand. Friends, over here we understand logically कि जो सारा सिक्योरिटीज को लेके इंडेक्स बनाया जाता है वो सारा सिक्योरिटीज रेगुलरली डिविडेंड पे करता रहता है. So to the extent of the dividend is paid by these companies, what will happen? The value of the share is adjusted. और उसकी वजह से say over here we are adjusting the dividend. Index itself dividend नहीं देता है, पर जो सिक्योरिटीज इंक्लूडेड है इंडेक्स में वो डिविडेंड दे सकती है, रादर देती है, और उसकी वजह से वो वैल्यू यहाँ पे हमने एडजस्ट किया है. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और इंटरेस्ट है उसको हमने ऐड किया क्योंकि जो भी स्पॉट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करेगा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पे ऐड करना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट द गेन. यहां पे ऐसा समझने का गेन और लॉस on short index futures if index turns out to be 22,500 in 3 months time. So going back to the question, हमको बेसिक एक इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसपे स्पॉट इंडेक्स वैल्यू एंड सो ऑन. फिर हमको दे रखा है कि 4 महीने का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज से गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग.
यहाँ पे हमको हेजिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है. इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग, और हमको लॉट साइज भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है. सो बिफोर वी कंप्यूट दैट से व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस फॉर द शॉर्ट पोजीशन, सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट मस्ट बी द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच वी वुड हैव टेकन द शॉर्ट पोजीशन फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग, and the required beta will be taken as 0. Second part of the question. Calculation of profit or loss for short position entered upon for the purpose of hedging. Full stop. In the write down, working note number 1, calculation of number of contracts to be entered upon. तो सबसे पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने एंटर किया होगा. It is value of the portfolio into beta of portfolio minus beta required divided by futures index value into lot size. What is the value of the portfolio? Value of the portfolio is 50,50,000. Multiplied with beta of the portfolio is 1.50. Required beta is 0. Divided by the index value. Index value has been calculated by us 25250. Multiply with the lot size which is given to us as 5050. This is the way we are required to make the calculation of answer. 25250 into 5050. So it comes to 12,62,500. 50,50,000 into 1.5 divided by futures index value into lot size. The answer comes to exactly 6 contracts. तो हमने ये जो 6 कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया था उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, दैट इज आस्क्ड अपॉन टू अस इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. I request you to put your answer in the chat box that what is the answer of the second question. The gain का मतलब क्या समझेंगे, gain और loss ऐसा ही समझने का. On short futures position if index turns out to be 22,500 in 3 months time. Please put your answer in the chat box. Let us have understanding how to calculate the answer. सबसे पहले मैं थोड़ा इनफॉर्मली आपको समझा देता हूं. सपोज कि ये जो सारा डिटेल्स से रखा था वो दे रखा था 1 जनवरी का. तो क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, we assume that the futures contract on BSE Index with 4 months maturity is used to hedge the value of the portfolio over the next 3 months. हम लोग 4 महीने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months. लॉट साइज दे रखा, दैट्स फाइन. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दे रखा वो हमने कैलकुलेट किया. व्हाट इज द गेन और लॉस ऑन शॉर्ट पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 22,500 इन 3 months टाइम. यानी बेसिकली क्या हुआ फ्रेंड्स, हमने 1 जनवरी को 30th April के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया. किसका कॉन्ट्रैक्ट किया,
we enter into the transaction for sale index. What was the price at which the contract was entered upon? The price at which it was entered upon is 25250. We understand that say हमने ये प्राइस पे सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर दिया है. 50 is the lot size and 6 number of contract. 3 महीने के बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेट से आपको प्रॉफिट या लॉस का गिनती करना है. इट मींस दैट से इनडायरेक्टली इट हैज बीन गिवन टू अस, और पहले भी वो क्लैरिफिकेशन है कि हमको हेजिंग 3 महीने का ही करना था. व्हाट हैपेंस दैट से 3 महीने के बाद हमको 1 महीने का वापस फ्यूचर्स करना पड़ेगा. To cancel the original contract, you have to enter into the reverse of the original contract. यानी आपको क्या करना पड़ेगा, बाय इंडेक्स करना पड़ेगा. नाउ 31st ऑफ मार्च को 30th ऑफ अप्रैल का फ्यूचर्स प्राइस क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 3 महीने बाद का स्पॉट प्राइस दे रखा है 22,500. सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 22,500 plus 22,500 into 0.09 into 1 divided by 12. 1 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, माइनस 22,500 into 0.06 into 1 महीने का डिविडेंड यहाँ पे डिडक्ट करेंगे. सो 25,000 into 9%. सो 2250 divided by 12. यानी क्या होगा, यहाँ पे 187.5 को ऐड किया जाएगा, और 22,500 into 6% divided by 12, यानी 112.5 को डिडक्ट किया जाएगा. इट मीन्स दैट 22,575 is the futures price that must be prevailing on 31st of March for 30th of April. 31st of March को 30 अप्रैल के लिए ये फ्यूचर्स प्राइस चल रहा होगा. Difference of both of them is a profit. How much is the profit? 2675. What is the lot size? 50. And what is the number of contracts? 6. So the amount of the profit is 8,02,500. This is the way the answer is calculated. Sorry, there is an error. This is 168,175. So it is 22,562.5. Sorry, 556.25. So there is a profit of 2693.75. So it is 8,08,125. That is the amount of the profit. So write down answer. Answer for the second part of the question, write down. Over here, we have to compute profit or loss after 3 months. Comma, for futures contract
entered upon before 3 months for 4 months. Full stop. With paragraph read down. Importantly, today ब्रैकेट में लिखो आफ्टर 3 months, comma 1 month futures contract is required to be entered upon for the purpose of determining profit or loss. Full stop. Today, 1 month reverse futures contract will be entered upon, comma, for the purpose of hedging. I'm sorry, for the purpose of settling the transaction. Full stop. Now let us with paragraph. Working note for calculating 1 month futures contract. 1 month futures price ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं आफ्टर 3 months, क्लैरिफिकेशन के लिए 3 महीने के बाद 1 महीने के लिए स्पॉट प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड। 3 महीने बाद का स्पॉट प्राइस ये रखा है क्वेश्चन में 22,500 प्लस 22,500 इंटू 0.09 माइनस 0.06 इंटू 1/12, क्योंकि 6% का इंटरेस्ट ऐड करो 1 महीने के लिए, 6% से डिविडेंड माइनस करो, उससे नेट कर सकते हैं। So 22,500 plus 22,500 into 3% divided by 12. So 56.25. So 22,556.25. That is the way we are required to make the calculation of answer. Next, calculation of profit or loss on settlement. उस पे क्या कंपेयर किया जाएगा? सेल वैल्यू माइनस बाय वैल्यू into lot size into number of contracts. We understand that say originally the contract was entered upon for sale,
तो उसके लिए सेल वैल्यू क्या है 25250, बाय वैल्यू क्या है 22,556.25, multiplied with the lot size is 5050 into number of contracts HA. That comes to 8,08,125. This is the way the profit or loss is calculated. ओवरऑल पूरे क्वेश्चन का समरी, सबसे पहले फ्यूचर्स प्राइस कैलकुलेट किया टेकिंग इनटू अकाउंट द स्पॉट, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड. ऑफ कोर्स सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया जाएगा, और फिर 3 महीने के बाद 1 महीने का फ्यूचर्स प्राइस कैलकुलेट करेंगे, और जो दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज द प्रॉफिट और लॉस दैट वी हैव. This is the way we are required to make the calculation of answer.